All right, students, let's start our lecture. Good afternoon to everyone. I think within last lecture, we have seen what is .NET Framework, which are the components or which are the blocks that are present in .NET Framework. Right, means we can say that how .NET Framework is built. Right, it is built with the help of which components, right, that we have already seen in previous lecture. As we have discussed that within .NET Framework, there are many different blocks, that is operating system, common language runtime, base class library, it is also known as framework class library, ADO.NET and XML. That layer is also known as data access layer because it is used to communicate or it is used to interact with the database. Another is Windows Forms, which is used for Windows application or a desktop application. Then it is web forms, which is used for web application and web services, right? And then it is common language specification, that is the rules and regulations that the languages has to follow if the language wants to become compatible with .NET Framework. And obviously about that, there are many different languages with the help of which we are able to build, develop, deploy, and execute different kinds of application with the help of .NET Framework, right? And we have also seen these blocks in brief. So today we will start with common language runtime, right? And we will see this topic in detail as it is also there in your syllabus, that is 1.4 CLR. And obviously it is also known as execution model, right? As we have discussed in last lecture that CLR is known as the heart of .NET Framework, right? Means we can say that it is the core component of .NET Framework, right? Because अगर हमारे पास CLR नहीं होता .NET Framework के अंदर, then what would happen? Obviously, we will not able to convert MSIL code into native code, right? Because we have seen yesterday, that is within last lecture when we were doing the topic that is CLR, right? उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमें जो भी MSIL कोड है, राइट, उसको अगर हमें नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट हो पाए, राइट, तो हमें क्या चाहिए? वी नीड CLR, और CLR के अंदर हमें चाहिए JIT कंपाइलर, राइट? सो एज वी नो, हम सोर्स कोड कोई भी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं जो .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, राइट? सो वी कैन से कि अगर VB लैंग्वेज है, C# लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, हम ये कोई भी लैंग्वेज का यूज करके हम सोर्स कोड लिख सकते हैं। मीन्स हम हायर लेवल लैंग्वेज का यूज करके हम एप्लीकेशन बना सकते हैं, right? And after that, obviously with the help of language specific compiler, again more precise with the help of language specific compiler. आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे compiler लिखा है, right? But this compiler must be language specific compiler because we know that compiler are used to compile the source code and it is to be converted into the form so that further it can be executed, राइट? कंपाइलर का टास्क क्या होता है? वो सोर्स कोड लेता है और उसको वो फॉर्म में कन्वर्ट करता है आफ्टर चेकिंग द एरर, आफ्टर चेकिंग द सिंटैक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट? वो फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि हम फर्दर उसको एग्जीक्यूट कर पाए। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं, सिंटैक्स डिफरेंट होती है, कीवर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सो ऑब्वियसली अगर हम VB लैंग्वेज का यूज करके .NET फ्रेमवर्क के अंदर सोर्स कोड लिखते हैं, देन ऑब्वियसली VB का कंपाइलर .NET फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। अगर हम C# लैंग्वेज का यूज करते हैं, देन ऑब्वियसली C# लैंग्वेज कंपाइलर .NET फ्रेमवर्क के साथ एसोसिएट होना चाहिए, तो ही हम वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के सोर्स कोड को हम फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए कन्वर्ट कर पाएंगे आफ्टर चेकिंग द एरर्स, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि हम सोर्स कोड कोई भी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, right? The thing is that with the help of language specific compiler, वो किसके अंदर convert करेगा? Obviously, it will convert it into Microsoft Intermediate Language, Assembly Intermediate Language, Common Intermediate Language, or it is also known as just Intermediate Language, right? So language specific compiler source code को Microsoft Intermediate Language के अंदर convert करेगा, that is MSIL,
right? Now, another thing is that this MSIL is known as managed code. Again, I repeat, MSIL is known as managed code. Why it is known as managed code? Because we can say that code that is developed with the language compiler, right, and that targets to CLR is called managed code. Means in short, we can say the code which is targeted to CLR, which is understandable to CLR, right? That kind of code is known as managed code. And another thing is that the code that is developed without considering the conventions and requirements of CLR is known as unmanaged code. मतलब जो कोड CLR को समझ में नहीं आता है, the code that is not targeted to CLR, the code which is not developed by considering the conventions, rules and regulations of CLR, right? That kind of code is known as unmanaged code, or it is also known as unmanaged component, right? सो व्हाट विल हैपन, हम सोर्स कोड कोई भी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर विल बाइफरगेट कि मैनेज कोड कौन सा है और अनमैनेज कोड कौन सा है, राइट? मैनेज कोड मीन्स ऐसा कोड कि जो MSIL के अंदर कन्वर्ट हो पाए, राइट? सो दैट काइंड ऑफ कोड इज नोन कोड बिकॉज इट इज अंडरस्टैंडेबल टू CLR. लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो CLR के कन्वेंशंस को यूज करके नहीं बनाया गया है, then those components are considered as unmanaged code because they are not targeted to CLR. They are also known as unmanaged component जो direct operating system की services के ऊपर execute होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली CLR को तो वो समझ में आने वाला नहीं है, तो वो CLR उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा. इट मीन्स अगर उसको एग्जीक्यूट होना है तो वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना पड़ेगा, राइट? सो वी कैन से कि हम सोर्स कोड कोई भी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन बाय द लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर, राइट? वो क्या करेगा? it will bifurcate that it is a managed code and another is unmanaged component, right? And after that जो managed code है उसे हम MSIL कहते हैं, right? वो further कहाँ पे जाएगा? That MSIL code is given to CLR, that is common language runtime. Obviously it will provide the runtime environment, right? Now what is the scenario? CLR के अंदर क्या है? It is a JIT compiler, just in time compiler. Now what is the task of just in time compiler? जब जो कोड की जरूरत है, राइट, वो वही कोड को कंपाइल करके उसको फर्दर नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए, right? So that compiler which is present in CLR is known as just in time compiler, that is JIT compiler, right? ऑब्वियसली कल हमने डिस्कस किया था कि हम डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज करके बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, एंड इफ वी कंसीडर दोस एप्लीकेशन, अगर हम वो पूरी एप्लीकेशन मेमोरी के अंदर लोड करने जाएंगे और पूरी एप्लीकेशन को हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करने जाएंगे, देन ऑब्वियसली वी विल नॉट गेट द परफॉर्मेंस, बिकॉज जितनी बड़ी एप्लीकेशन होगी उसको कंपाइल होने में उतना टाइम लगेगा, राइट? और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या होगा? उसे बहुत सारी मेमोरी चाहिए होगी, एंड ऑब्वियसली अगर उसको मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी, देन आवर एप्लीकेशन विल नॉट एबल टू एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली, परफॉर्मेंस हमें नहीं मिलेगा. That's why within CLR there is a JIT compiler, that is just in time compiler, ताकि जब जो कोड की जरूरत है वही कोड कंपाइल होके नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट होता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो एग्जीक्यूट हो पाए, right? So this is the significance of just in time compiler which is present in common language runtime, or you can also say it as a CLR, right? So we can say कि CLR .NET फ्रेमवर्क के अंदर रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या कर पाए, जो MSIL कोड है उसको हम नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट कर पाए और बाद में हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए, राइट? So because of this we can say कि .NET framework also achieves portability. Again, I repeat, because of this, we can also say that .NET Framework also achieves portability. Now, what is portability?
पोर्टेबिलिटी मीन्स हम कोई भी कोड कोई भी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट कर पाते होने चाहिए. Means we must be able to execute our code on any kind of machine, right? That is known as portability. Now what is the significance of it? मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का यूज करके जो भी मैनेज कोड बनता है इट इज MSIL कोड, राइट? और MSIL कोड ऐसा कोड है, राइट, कि जिसको अगर हम लेंगे और कोई भी मशीन के ऊपर हम CLR को देंगे, वो CLR उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, बिकॉज CLR को MSIL कोड समझ में आता है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट our code or our application will achieve portability because हमारा कोड आफ्टर ऑल किसके अंदर पहले कन्वर्ट होता है? MSIL के अंदर कन्वर्ट होता है. एंड आफ्टर दैट MSIL कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए CLR के अंदर JIT कंपाइलर है जो उसको नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, राइट? ऑन डिमांड बेसिस, ऑब्वियसली एज इट इज अ JIT कंपाइलर, सो इट इज ऑन डिमांड बेसिस, राइट? और उसके बाद वो नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करके हमें वो एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. That's why we can say that .NET Framework also achieves portability, right? Another thing is that with the help of this MSIL code, right? कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि MSIL कोड के साथ क्या सिनारियो होगा, क्या केस होगा. जैसे मैंने सिंपल एक डेटा टाइप का एग्जांपल लेके आपको मैंने वो टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज अगर हम VB लैंग्वेज का यूज करते हैं तो हमें उसके अंदर इंटीजर डेटा टाइप मिलेगी. अगर हम C# लैंग्वेज का यूज करते हैं तो हमें उसके अंदर इंट डेटा टाइप मिलेगी. C++ लैंग्वेज का यूज करेंगे उसके अंदर भी हमें इंट डेटा टाइप मिलेगी. एंड ऑब्वियसली द साइज ऑफ द डेटा टाइप, द मेमोरी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट वेरिएबल which is created with that data type is totally different in all the languages. सारी languages के अंदर data type की size, मतलब उसको जो memory चाहिए value store करने के लिए, वो different होती है, right? So according to the data type, MSIL के अंदर वो .NET की data type के साथ उसको map कर देगा. That's why .NET के अंदर सिर्फ एक integer variable के लिए there are 3 different data types, that is int16, int32 and int64. अगर कोई लैंग्वेज के अंदर इंटीजर डेटा टाइप 2 बाइट्स कंज्यूम करती है तो एंड इट विल बी मैप्ड विद system.int16. अगर कोई लैंग्वेज के अंदर वो 4 बाइट्स कंज्यूम करती है देन इट विल बी मैप्ड विद system.int32. एंड अगर कोई लैंग्वेज के अंदर वो पर्टिकुलर डेटा टाइप कंज्यूम्स 8 बाइट्स देन इट विल बी मैप्ड विद system.int64 data type of .NET Framework within MSIL code, right? Means we can say that this MSIL code is totally is according to the syntax, according to the rules and regulations that are needed in .NET Framework and that are present within the conventions of CLR, right? So this is the most important thing regarding MSIL, right? So what will happen? वो MSIL कोड CLR लेगा. CLR के अंदर JIT कंपाइलर है जो ऑन डिमांड बेसिस के ऊपर जो भी कोड की ज़रूरत है एग्जीक्यूट करने के लिए वो नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा. एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द नेटिव कोड ऑब्वियसली वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. एंड if it is unmanaged component or it is unmanaged code, वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का यूज करके एग्जीक्यूट करने की हमें फैसिलिटी देगा. So this is the important thing about CLR and it is also known as execution model, right? Because obviously as we have seen कि CLR provides us the runtime environment, that is execution environment, ताकि हम हमारी application को execute कर पाए obviously after compilation, and that is the important thing, right? But by then CLR का यूज करके हम हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, right? Now obviously as we know कि अगर हम ये CLR का यूज करेंगे मीन्स ये जो टूल्स प्रोवाइड करता है उसका यूज करेंगे तो वो हमें इंटरऑपरेबिलिटी का फीचर भी हमें देगा, राइट? कल ही हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इंटरऑपरेबिलिटी. इंटरऑपरेबिलिटी मीन्स बहुत सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, right? So this thing is also present within .NET Framework, right? And it is obviously again it is because of CLR.
बिकॉज CLR इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के जिसका यूज करके हम .NET की एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? ऑल राइट, so this is all about the execution model, or we can say it is all about CLR, राइट? कि जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? ऑल राइट, now let's talk about components of common language runtime, or purpose of common language runtime, or rules of common language runtime, right? Let's talk about it. So we can see there are many different rules that are performed by CLR. There are many different things for which we use CLR, right? For the execution purpose of our application, right? So first is that we can say it is a class loader, right? That is the first component. Now, what is the purpose of class loader? We can say it loads the classes into the system memory. मतलब जब जो क्लास की ज़रूरत है वो क्लास .NET फ्रेमवर्क के अंदर से वो लेगा, and it will load that particular class into the memory for the execution. For example, मैंने मेरी एप्लीकेशन के अंदर strings related function का यूज़ किया है, right? So वो क्या होगा, string related function .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो क्लास के अंदर प्रेजेंट है, right? वो क्लास वो .NET फ्रेमवर्क के अंदर से लेगा और वो क्लास को वो मेमोरी के अंदर लोड करेगा, ताकि एग्जीक्यूशन टाइम के वक्त क्या हो सके, मैं वो जो भी मेरी एप्लीकेशन है, मेरी एप्लीकेशन के अंदर जो फंक्शंस मैंने यूज़ किए हैं, राइट, वो फंक्शन के लिए वो क्लास के कंसर्न करके उसमें से वो पर्टिकुलर फंक्शन को वो एग्जीक्यूट कर पाए, right? So this is the significance of class loader part of CLR. कि as I have told that CLR provides the runtime environment, वो हमें runtime environment provide करता है. So obviously runtime environment के लिए means हमारी एप्लीकेशन को रनिंग मोड में लाने के लिए, हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट होने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत है, राइट, वो सारी चीज़ हमें CLR प्रोवाइड करेगा. That's why we can say that CLR plays many different roles. CLR बहुत सारे different roles play करता है. And from that, the first role that we have talked about is it is class loader, right? So the purpose of class loader, it loads the classes into the system memory, right? Now there are another roles, right? That is MSIL to native compiler. Obviously we have already discussed that MSIL code is the managed code, means that is the code which is targeted to CLR, right? और अगर वो code targeted to CLR है तो CLR क्या करेगा, right? It will translate the code into the native code. It will compile the code into the native code, right? Because MSIL is CPU independent language, right? CPU independent language means अगर एक बार कोई भी source code MSIL के अंदर convert हो जाएगा, then it is totally independent of CPU. Processor के ऊपर now it will not depend on processor, right? That's why it is also known as CPU independent language, right? Now what CLR will do? Already we have discussed CLR का ये जो रोल है that it converts MSIL code to native compiler उसके अंदर present है, right? वो क्या करेगा, MSIL code को वो लेगा, उसको native code के अंदर convert करेगा with the help of JIT compiler, right? That's why it is written over here that is MSIL to native compiler, right? All right, another role of CLR is obviously garbage collection. Garbage collection का feature क्यों CLR हमें provide करता है? Because again the same thing, CLR provides the runtime environment, right? और अगर वो runtime environment provide करता है, right, तो उसके अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम खत्म होती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट को मेमोरी में से रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी जो उसका लाइफ टाइम है वो खत्म हो गया है. अगर हम वो ऑब्जेक्ट्स जिसकी लाइफ टाइम खत्म हो गई है, अगर हम उसको मेमोरी में ही रहने देंगे, देन दैट मेमोरी विल बिकम नॉट यूजेबल टू अनदर ऑब्जेक्ट्स, राइट? और वो अगर हमें एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के वक्त अगर वो मेमोरी हमें यूज नहीं होंगी, देन ऑब्वियसली अगेन द सेम थिंग, परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा. दैट्स व्हाई
with the help of this garbage collection rule, right? CLR क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट्स जो अब यूज नहीं होने वाले हैं, मीन्स द लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओवर, कंप्लीटेड, राइट, वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, वो मेमोरी में से वो ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देगा. इट विल डीएलोकेट द मेमोरी फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज दे आर नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड विद इन अवर एप्लीकेशन. हमारे एप्लीकेशन के अंदर अब वो आगे यूज नहीं होने वाले हैं. दैट्स वाई वो क्या करेगा, वो उसको मेमोरी में से निकाल देगा आफ्टर डीएलोकेटिंग द मेमोरी टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वेरिएबल्स या फिर ऐसा कोड जो अब आगे यूज नहीं होने वाला है, दैट इज नोन एज गार्बेज इन अवर फील्ड, राइट. सो ऑब्वियसली CLR वो रोल भी प्ले करेगा, दैट इज इट विल हेल्प इन गार्बेज कलेक्शन, right, by deallocating the memory and by removing unusable objects from the memory, right. So that is also the role of CLR. Now another important role of CLR is code manager. Now what is code manager? Obviously CLR takes care of code management. जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने की जरूरत होती है, राइट, सो CLR will takes care for code management, that is वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ताकि वो कोड को मैनेज कर पाए. फर्स्ट इज ऑब्वियसली मेमोरी मैनेजमेंट, बिकॉज अगर कोई भी कोड को एग्जीक्यूट होना है उसे मेमोरी के अंदर लोड होना पड़ेगा, then only we will able to execute that particular code. So the first service that is provided within code manager is memory management, right. Another is it also provides the support, or we can say it also provides the services for thread management, then right, then it is security management, right, and many other system services, right. Means we can say the code that is targeted to CLR, right, it will be benefited by the features, that is cross-language integration, cross-language exception handling, security enhancement, deployment support, debugging, right. Means we can say this code manager part of CLR will plays many different other roles, or we can say that it provides many different services, right, for our application. So the thing is that if we talk about cross language integration, now what is cross language integration? For example, आप एक application develop कर रहे हो, right, and within that application obviously it is a very big application, it might be divided according to the functionality, या फिर हम उसको यूजर के टाइप के हिसाब से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट. अगर हमारी टीम के अंदर 10 पीपल है तो हम 5 पीपल को एडमिन का पार्ट दे सकते हैं, 2 पीपल को कस्टमर का पार्ट दे सकते हैं, अनदर 2 पीपल को हम ऑपरेटर का पार्ट दे सकते हैं, एंड 1 पर्सन कैन बी एलोकेटेड फॉर गेस्ट यूजर, राइट. इस हिसाब से अगर हमने पूरी हमारी टीम को डिवाइड किया है, उसमें से फॉर एग्जांपल 10 पीपल में से 5 पीपल ऐसे हैं जिसको VB आता है, 5 पीपल ऐसे हैं जिसको C# आता है. नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो? ऑब्वियसली जो 5 पीपल है जिसको VB लैंग्वेज आती है वो अपना कोड VB लैंग्वेज के अंदर डेवलप करेंगे, और जो दूसरे 5 पीपल है जिसको C# लैंग्वेज आती है वो अपना कोड C# लैंग्वेज के अंदर डेवलप करेंगे. नाउ व्हाट विल हैपन, राइट, जब भी ये कोड कंपाइल होगा, राइट, वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर बाय द एंड वो MSIL के अंदर ही कन्वर्ट होना है, राइट. सो क्या होगा, अगर ये VB और C# वाले दोनों कोड हम कंबाइन करके एक ही एप्लीकेशन के अंदर ले आएंगे, then too it is possible to compile that application, बिकॉज जो VB लैंग्वेज का कोड है ऑब्वियसली वो VB स्पेसिफिक कंपाइलर होगा, उससे कन्वर्ट हो जाएगा. जो C# लैंग्वेज का कोड है वो C# स्पेसिफिक कंपाइलर होगा, उसका यूज होके वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि कैसे हम क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन, दिस थिंग इज नोन एज क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन, कि हम एक ही एप्लीकेशन के अंदर दो अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करके हमारी एप्लीकेशन के अंदर सारे कंपोनेंट्स को हम इंटीग्रेट करते हैं, right. And why it is possible? Because .NET allows us to develop the code in many different languages. और the most important part is वो language specific compiler होना चाहिए, because if
द लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर इज प्रेजेंट, तो बाय द एंड उसे क्या करना है, MSCL के अंदर ही कन्वर्ट होना है, और MSCL तो CLR को समझ में आता है। दैट्स व्हाई दिस इज द थिंग कि ये हमें क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, एंड इट इज वेरी यूजफुल फीचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर व्हेन इट कम्स टू डेवलप एनी एप्लीकेशन विच इज वेरी लार्ज, बिकॉज वी नो कि हमारे पास जो भी डेवलपर्स होंगे, इट डजंट मीन कि हमारे पास 100 डेवलपर्स है तो 100 डेवलपर्स को सारी लैंग्वेज आती होगी। नो, दैट इज नॉट द केस। कोई डेवलपर्स ऐसे होंगे जिसे VC++ आता है, दैट इज विजुअल C++ आता है। कोई डेवलपर्स ऐसे होंगे जिसे सिर्फ G# आता है। कोई डेवलपर्स ऐसे होंगे जिसे C# आता है। कोई डेवलपर्स ऐसे भी होंगे जिसे सिर्फ VB आती है। देन व्हाट वी विल डू, वी कांट डू लाइक दैट कि ओके अगर पूरी एप्लीकेशन सिर्फ VB में बनानी है तो हम वही डेवलपर को देंगे, पूरी एप्लीकेशन अगर C# में डेवलप करनी है तो हम वैसे डेवलपर्स को दे सकते हैं। नो, इट कांट बी द सिनेरियो। अगर हम ऐसा इस हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जब VB की एप्लीकेशन डेवलप हो रही होगी तो वो C# डेवलपर्स क्या करेंगे, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर, दिस इज द यूजफुल फीचर जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेवलपर को कोई भी लैंग्वेज आती हो, इफ इट इज सपोर्टेड विद इन .NET फ्रेमवर्क, तो हम उसको वो डेवलपर्स के बीच में हमारी फंक्शनलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड बाय द एंड वो सारी फंक्शनलिटी को हम एक एप्लीकेशन के अंदर कंबाइन कर सकते हैं, एंड वी आर ऑल्सो एबल टू कंपाइल दैट पर्टिकुलर code, right? So this is the important thing, this is the important feature which is provided by .NET Framework, and within .NET Framework it is provided by CLR, and more precise within CLR it is provided by Code Manager, part of CLR, right? And obviously अगर क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन है तो ऑब्वियसली क्रॉस लैंग्वेज एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पॉसिबल है। अगर एरर आती है देन ऑब्वियसली एरर डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो भी हैंडल हो सकता है, राइट? So these are another 3 different roles of CLR. Let's move further. Now another role of CLR is obviously debugger. Debugger means it will perform debugging at runtime. Now what is debugging? Debugging means हम कब यूज करते हैं, अगर हमें स्टेप बाय स्टेप सारी लाइंस को एग्जीक्यूट करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है टू debug something, means if we want to find the error, where is the error, right? अगर हम एरर फाइंड करने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, डीबगिंग करते हैं, देन दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस डीबगर कंपोनेंट ऑफ CLR, राइट? फॉर एग्जांपल हम वॉच विंडो यूज करते हैं, वॉच विंडो के अंदर हम कोई वेरिएबल को वॉच करने के लिए हम वहाँ पे पॉइंटर सेट करते हैं, देन वी आर ऑल्सो एबल टू पुट ब्रेक पॉइंट। दूसरा है वी आर ऑल्सो एबल टू स्टेप इन एंड स्टेप आउट। ये बहुत सारे फीचर्स है जो .NET के अंदर अवेलेबल है, राइट? एंड ऑब्वियसली वो रोल कौन प्ले करता है, डीबगर प्ले करता है, विच इज द पार्ट ऑफ CLR, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, राइट? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर कि अगर हमें डीबगिंग करना है then obviously there are many different things available within .NET framework, और हम इसका यूज करके हम डीबगिंग भी कर सकते हैं at the time of execution, that is at runtime. Another is security engine. This is also an important feature of CLR कि वो security provide करता है, right? Now why this security is achieved with the help of CLR? Because CLR के अंदर ये security engine है, right? Which follows code access security model, that is CAS model. Again I repeat, वो कौन से मॉडल को फॉलो करता है? It follows code access security model, that is CAS model, right? ये मॉडल के अंदर क्या है? What does this model does? The CLR enforces restrictions on the managed code through the use of objects called permissions, right? मतलब permission object है जो obviously CLR का एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट? वो क्या करेगा? वो restrictions प्रोवाइड करता है on managed code, राइट? ताकि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो मैनेज कोड के ऊपर परमिशन है वही मैनेज कोड एग्जीक्यूट हो सकता है, राइट? और दूसरी चीज, अगर वो पर्टिकुलर मैनेज कोड के पास परमिशन नहीं है और हम वो कोड एक कंप्यूटर से कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर के अंदर पेस्ट करके रन भी करना चाहेंगे, देन टू इट विल नॉट एबल टू एग्जीक्यूट,
राइट। मीन्स वी कैन से कि अगर हमें इस हिसाब से सिक्योरिटी चाहिए, राइट, तो हम ये एक सिक्योरिटी इंजन का यूज करके वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड दिस सिक्योरिटी इंजन यूजेस कैश मॉडल, दैट इज कोड एक्सेस सिक्योरिटी मॉडल। अनदर थिंग इज दैट कैश मॉडल क्या स्पेसिफाई करता है? इट स्पेसिफाइज व्हाट द कोड कैन एक्सेस instead of specifying who can access the resources. This is a very important thing, राइट। ये कैश मॉडल क्या स्पेसिफाई करता है कि कोड कौन कौन सी चीजें एक्सेस कर सकता है, इंस्टेड ऑफ हु कैन एक्सेस दिस रिसोर्सेज। इट डजंट डिपेंड्स ऑन द यूजर, राइट, इट डिपेंड्स ऑन द कोड। इट स्पेसिफाइज कि हमारा कोड कौन कौन सी रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा, इंस्टेड ऑफ कौन यूजर है जो वो रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट। बिकॉज अगर हम हमारे कोड के अंदर रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि वो i3 प्रोसेसर के ऊपर ही रन होना चाहिए, राइट, सो नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो? अगर कोई पर्सन हमारा कोड कॉपी करके कोई दूसरे मशीन के ऊपर पेस्ट करके एग्जीक्यूट करना चाहेगा, देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली अगर वहां पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, right? So this is the kind of security which is provided by security engine component of CLR, and it is a very important part because अगर हमें इस हिसाब से सिक्योरिटी मिलेगी तो हमारे कोड के लिए सिक्योरिटी होगी कि कोई भी पर्सन XYZ पर्सन आके हमारा कोड थेफ्ट नहीं कर सकता है, राइट, स्टोल नहीं कर सकता है, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ऑलराइट, now another component of CLR is exception manager, means CLR also plays the role of exception manager. Now what is exception manager? Obviously it handles all the exceptions at runtime, right? Execution time के वक्त हमारी application के अंदर जो भी exceptions आती है, राइट, अगर उसे मैनेज करना है, उसे हैंडल करना है, तो हम ये एक्सेप्शन मैनेजर कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशन? व्हाट डज इट प्रोवाइड्स? एक्सेप्शन मैनेजर के अंदर हमें पता है कि जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट होता है, राइट, और उसके अंदर एक्सेप्शन आती है, देन यू आर एबल टू सी दैट येलो स्ट्रिप, राइट, वो लाइन के ऊपर येलो स्ट्रिप होगी, उसके साथ एक बॉक्स अटैच होगा जिसके अंदर वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो एबल टू सी सम काइंड ऑफ सोल्यूशन, राइट। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट यूज नहीं किया है तो, दैट इज ट्राई कैच ब्लॉक आपने यूज नहीं किया है तो, दिस विल बी द सिचुएशन। देन टू, ये जो हमें येलो स्ट्रिप मिलती है, वो बॉक्स मिलता है कि कौन सी एरर है, राइट, दिस ऑल थिंग्स आर हैंडल्ड बाय दिस एक्सेप्शन मैनेजर। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर हमने ट्राई कैच ब्लॉक को यूज किया है, राइट, देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली अगर हमने ट्राई कैच ब्लॉक को यूज किया है तो वो हमारी एप्लीकेशन को एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होने देगा। वो क्या करेगा? अगर ट्राई पार्ट में जो भी स्टेटमेंट्स है उसके अंदर कोई भी एरर आती है तो वो हमें कहाँ पे जंप करके देगा? वो हमें कैच ब्लॉक के अंदर जंप करके देगा, ना ऑब्वियसली कैच ब्लॉक के अंदर हम वो एक्सेप्शन को हैंडल कर पाएंगे, राइट। मीन्स द थिंग इज दैट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट, वो हमें डिफरेंट वे से एक्सेप्शन को हैंडल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड कौन प्रोवाइड करता है? Exception manager component of CLR, right? Now another component of CLR, or more precise, another role that is played by the CLR is type checker. Now what is type checker? Obviously ये feature क्या ensure करेगा? That the objects are always accessed in the compatible way, right? Means we can say that CLR will prohibit a code from assigning a 10-byte value to the object that occupies 8 bytes. Means in short, it will not allow narrowing conversion, right? It will only allow widening conversion, right? Now what is narrowing type conversion and what is widening type conversion? नैरोइंग टाइप कन्वर्जन मीन्स अगर बड़ी डेटा टाइप की वैल्यू को हम छोटी डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर असाइन करना चाहते हैं, देन दैट इज सेड एज नैरोइंग टाइप कन्वर्जन,
और अगर हम छोटी डेटा टाइप की वैल्यू को बड़ी डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर अगर हम असाइन करना चाहते हैं, देन दैट इज नोन एज वाइडनिंग टाइप कन्वर्जन। ऑब्वियसली अगर हम नैरोइंग टाइप कन्वर्जन करेंगे, देन व्हाट विल बी द सिनेरियो, वो वैल्यू ट्रंकेट होने के चांसेस है, मींस वी विल एबल टू लॉस द वैल्यू, बिकॉज वैल्यू बड़ी है और डेटा टाइप की जो साइज है वो छोटी है, राइट। और बड़ी वैल्यू को हम छोटी साइज के वेरिएबल के अंदर हम असाइन करने जाएंगे, देन ऑब्वियसली सम पार्ट ऑफ द वैल्यू विल गेट लॉस्ट, right, truncate हो जाएगी। That's why this kind of conversion, that is narrowing type of assignment or narrowing type of type conversion, is not possible within .NET because the role of CLR, that is type checker, ये हमें करने की permission नहीं देगा। And obviously widening type conversion or widening assignment is possible because हमारे पास छोटी value है and it is to be assigned within the variable जिसकी size बड़ी है। तो ऑब्वियसली अगर हम वो असाइनमेंट करेंगे तो उस वक्त कोई भी वैल्यू के अंदर लॉस नहीं होगा, वैल्यू ट्रंकेट नहीं होगी, राइट। That's why we can say कि type checker is also an important part because वो हमें कौन सी टाइप का कन्वर्जन पॉसिबल है वो हमें स्पेसिफाई करके देता है। And obviously that is done with the help of type checker role of CLR, or it is also known as type checker component of CLR, right? Now the another component is thread support. Now what is thread? Thread is a lightweight process. What is process? We can say that the program which is in execution, that is known as process. मतलब जब हम कोई भी प्रोग्राम मीन्स executable statements लिखते हैं, that collection of statements is known as program. और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में होता है, then that is known as process. और अगर हम वो प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि वो लाइट वेट बन सके, राइट, देन दैट इज नोन एज थ्रेड, right? And obviously thread is supported within .NET framework because of CLR, और CLR के अंदर वो रोल है कि जो उसे सपोर्ट करता है। बिकॉज अगर हम बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, देन ऑब्वियसली वी विल नॉट एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस विच इज नीडेड, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन से कि CLR के अंदर ये जो थ्रेड सपोर्ट कंपोनेंट है, CLR का ये जो थ्रेड सपोर्ट रोल है, that will provide us the facility ताकि हम हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में, मीन्स वी कैन से वी आर डिवाइडिंग अवर प्रोग्राम्स इनटू लाइटवेट प्रोसेसेस और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। Another is COM marshaller. Now what is COM? COM, that is component object model, right? What does it allows? It allows us the communication between the application and the COM objects, right? COM objects, that is component object model, that is used right within our application. Means बहुत सारे ऐसे components होंगे, बहुत सारे ऐसे classes होंगे जो directly .NET framework के अंदर present नहीं है, right? Then too we are able to use those components, then too we are able to use those classes, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल्स है .NET फ्रेमवर्क के अंदर, राइट, कि जिसका यूज करके हम GUI डेवलप कर सकते हैं। मीन्स वी कैन डेवलप GUI इन बोथ द काइंड ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज विंडोज एप्लीकेशन एज वेल एज वेब एप्लीकेशन। बट कोई डेवलपर ऐसा भी होता है कि मीन्स ही डोंट लाइक द कंट्रोल्स, वो उसे वो कंट्रोल्स पसंद नहीं है जो .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। देन व्हाट दैट पर्सन कैन डू, वो पर्सन जो टूल किट उसे अच्छी लगती है, राइट, वो टूल किट को वो डाउनलोड करेगा और पर्टिकुलर मशीन के ऊपर इंस्टॉल करेगा और उसको बाद में .NET फ्रेमवर्क के साथ वो अटैच करेगा खुद की एप्लीकेशन के लिए, दूसरी सारी एप्लीकेशन के लिए नहीं, खुद की एप्लीकेशन के लिए वो .NET के साथ उसको अटैच करेगा। नाउ दिस toolkit which was external entity to .NET framework, right, that can be considered as a COM component, right? That's why अगर वैसे components के साथ हमारी application को communicate करना है, right, then that support is also provided within CLR,
बिकॉज ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन करने के लिए वो सारे कंट्रोल्स जो एक्सटर्नल एंटिटी है फॉर डॉटनेट फ्रेमवर्क, उसके रिगार्डिंग भी हमें क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके रिगार्डिंग भी हमें कोड की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? And that is provided by this commercial role of CLR. That support is provided by this component of CLR, right? And the last component that we can take within CLR is .NET Framework Class Report. Now, obviously, as we know कि .NET Framework की जो खुद की library है, it is very vast. बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज करके, राइट? तो उसके अंदर हमें बहुत सारे बिल्ट इन क्लासेस मिलेंगे जिसका यूज करके हम उसके अंदर जो फंक्शंस है, जो प्रॉपर्टीज है, मेथड्स है, जो इवेंट्स है, राइट, उसका यूज करके हम हमारी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. I want to interact with SQL Server database, right? Now what will happen? अगर मैं SQL Server database के साथ interact करना चाहती हूँ, right? तो मुझे obviously उसकी जो namespace है, that is system.data.sql client, उसको use करना पड़ेगा. Now within that SQL client namespace, there are another classes कि जो मुझे SQL Server database के साथ connection करने की facility देगा, data set को create करने की facility देगा with the help of data adapter, there is data reader, command, right? And these all classes are specific to that particular database, right? And those classes are grouped in one namespace, means in one logical group is created, right? Now what is the scenario? अगर मुझे SQL Server database के साथ interact करना है, then obviously I will use system.data.sql client namespace. लेकिन अगर मुझे Microsoft Access database के साथ interact करना है, then I will use system.data.oldb namespace, right? Because दोनों database different है, तो obviously उसके साथ interact करने के लिए उसके जो classes होंगे वो different होंगे. Likewise, if I want to interact with an Oracle database, then I need to use Oracle client namespace. If I want to interact with another kind of files, for example, Excel file, a Word file, then obviously there are another namespaces which can be used, another providers that I have to use to interact with those kinds of files, right? And for all this purpose, there are many different classes which are present in FCL, that is Framework Class Library. And if we have used this classes in our code, तो CLR को क्या करना पड़ेगा? At the time of execution, वो class को लेना पड़ेगा, उसको मेमोरी के अंदर लोड करना पड़ेगा और फिर वो एग्जीक्यूट कर सकता है. एंड ऑब्वियसली द क्लास लोडिंग पार्ट इज डन बाय क्लास लोडर, राइट? बट वो लाइब्रेरी का सपोर्ट होना जरूरी है. देन ओनली this class loader will able to access the class so that it can be loaded within the memory. That's why at the time of execution within CLR, which provides the runtime environment for our application, right? This role, this component, that is .NET Framework Class Library, right? It provides the support for BCL, that is Base Class Library, FCL, that is Framework Class Library, or you can also say it as a class library of .NET Framework, right? So students, these are different roles which are played by CLR, or you can also say these are different components of CLR कि जो हमें by the end हमारी application को execute करके, right, runtime environment provide करके हमें performance के साथ हमारी application को execute करता है, right? And we are able to also develop the application, deploy the application, and there are many different tasks, right, जो हम perform कर सकते हैं, right? So students, this is all about the topic, that is CLR, right? So let's do one thing. बहुत टाइम से हमने सिलेबस के साथ कंपेयर नहीं किया है, so हम वो भी कर देते हैं, right? So it's over here, right? This is your syllabus, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया है कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, राइट? फॉर एग्जांपल फ्रॉम द यूनिट 1,
1.1 was already completed. 1.2, that is .NET Framework, that also we have completed. And today we have completed topic 1.4, that is CLR, Common Language Runtime. And before that, we have also completed topic 1.5, that is Object-Oriented Concepts. Right? So we can say this unit 1, according to the syllabus, is completed. But still, we have to do the topic, that is .NET Framework class library. That is over here. That is, we can say .NET Framework class library, right? Within which we have to see namespace. We also have to see CTS, that is common type system, and data types, right? So these topics are still left to do, right? Okay. And they are also to be covered within unit 1. Now, if we talk about unit 2, obviously we have completed all the data controls, right? And then we have also completed, that is this part, that is 2.3 वेब सर्वर कंट्रोल्स. हमने सारे कंट्रोल्स कंप्लीट कर लिए. दैट इज HTML सर्वर कंट्रोल. वेब सर्वर कंट्रोल के अंदर स्टैंडर्ड, वैलिडेशन, नेविगेशन, लॉगिन, ये सारे कंट्रोल्स भी हमने कंप्लीट कर दिए. सो वी कैन से वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 2, दैट इज सर्वर कंट्रोल्स, राइट. यूनिट 3 तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था in both the way, that is practical as well as theory part, right. Unit 4 भी हमने complete कर दिया था, and before Unit 4 we have also seen global application class, right. Now from Unit 5 we have completed this 5.2, that is sitemap path server control, which is a navigation control, right, and we have also completed that. So we can say that Unit 5 is also completed. So if we talk about the syllabus, then according to the syllabus, these 3 topics are left which are to be covered in Unit 1, right? That is .NET Framework Class Library, Namespace, CTS, that is Common Type System, and Data Types, right? Another topics which we have already completed, that is we have also seen page life cycle, types of files and directories at the rate page class, structure, web.config file, machine.config file, login control simulation, right? So there are many different things which we have already completed. So first of all, we will complete these topics in next lecture, and after that we have to see many different extra topics also, right? So that we will do in further lectures. All right, students. So from my end, for today's lecture, everything is completed. अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई डिफिकल्टी है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, और उसके बाद हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे.